ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਖਤ। 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੈਫੇ, ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸੈਲੂਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਫਿਊ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Job one remains keeping people safe. This has been our government's focus right from the start of the pandemic. That's why today we started our meeting with a presentation about vaccine rollout from Dr. Tam, Major General Fortin, and President Stewart of the Public Health Agency. In just a few moments, Dr. Tam and Major General Fortin will provide more details about what they presented to the premiers. Yesterday, Health Canada approved the Pfizer-BioNTech vaccine as safe and effective. We now have a green light on getting shipments delivered and vaccines out to Canadians. The first 30,000 doses are expected to arrive on Canadian soil in just a few days. To all Canadians, if you're feeling relieved and hopeful, you're not alone. This is the good news we all needed. But remember, this is only the first step in what would be a massive project over a long winter. I announced to the premiers that the federal government will be covering the cost of these vaccines, as well as the supplies needed to administer them. Not only will doses be free for Canadians, but provinces and territories won't have to use their funding to pay for this vaccine. Vaccines are safe and effective. Serious side effects are incredibly rare. In the very unlikely event of an adverse reaction, though, we want to make sure that Canadians have fair access to support. So today, I can announce that we're creating a federal support program around vaccine safety for all Canadians and for all vaccines. This includes COVID-19 vaccines that will be rolled out soon. This program is based on the model Quebec has had in place for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries. Today, the premiers and I discussed what else we need to do while we roll out vaccines. The federal government has already covered the cost of billions of pieces of PPE and millions of rapid tests that we've sent to the provinces and territories. We've also provided tens of billions of dollars in funding to the provinces and territories, including through the Safe Restart Agreement and the Safe Return to Class Fund. This money is for everything from strengthening healthcare to improving ventilation in schools. 8 out of every $10 spent to protect and support Canadians through this crisis has been spent by the federal government. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 700 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,060 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 11,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। We have an additional 723 new cases diagnosed with COVID-19 in British Columbia, one of whom was epidemiologically linked, bringing our total number of people diagnosed with COVID-19 to 40,060. That includes 135 new people in the Vancouver Coastal Health Region, 456 in the Fraser Health Region, 10 people on Vancouver Island, 82 people in the Interior Health Region, and 40 people in the Northern Health Region.
We now have 9,524 active cases across the province, of whom 346 are in hospital, 83 of whom are in critical care or ICU. Additionally, we have 11,947 people under active public health monitoring and 28,948 people who have recovered from COVID-19. Today is one of the most tragic days we have had yet, where we've had an additional 28 people die from COVID-19, bringing the total number of people who've died in British Columbia to 587. And all but 2 of these people are elders and seniors who were in long-term care homes in various places across BC. And these are family, these are friends, these are people who've had interesting and challenging lives and have spent this last 10 months dealing with the challenges that we are all facing with this pandemic. And our condolences go to the families, to all of those who cared for people and their communities who lost loved ones. We mourn with you again today. Thankfully, we have no new healthcare outbreaks to report today, and the outbreak at one of the acute care units at Burnaby Hospital is now over, and the outbreak at Rotary Manor and Northern Health is also now over. We do still have 57 active outbreaks in long-term care and assisted living, and 8 in acute care units, involving 1,875 people, 1,194 residents with active cases still, and 671 staff. As we talked about yesterday, we now have at least one safe and effective vaccine that has been approved for use in Canada, and the start of immunization will be happening very soon. By this time next week, the first people in British Columbia will have been immunized. And as we shared yesterday, our COVID-19 immunization program will be starting. ब्रैम्पटन साउथ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। Brampton is a home of thousands of seniors who have helped shape our vibrant community. They deserve to live in safety and dignity. Our government stands ready to support them as they age. Last week in the fall economic statement, we announced $1 billion funding for safe long-term care. I have been working for months with my colleagues to bring change to long-term care. I'm proud that our federal government is working with the provinces and territories to set new national standards for long-term care in Canada. We're also committing over $35 million to support training of up to 4,000 personal support worker interns. Also, I'm proud to report that seniors will be prioritized for the vaccine, and the vaccine will be free for all Canadians. In the summer, those Brampton South seniors eligible for OAS and GIS receive tax-free support from our federal government right into their pockets. We have moved forward with increasing the New Horizons program and will stand ready to take additional actions as needed to support seniors. Please visit my website and continue to share your feedback. Your feedback is very important. It is always a pleasure to hear from you. Happy holidays and stay safe. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੇਰੇਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। We achieved a key milestone in our COVID-19 response with the approval of the first COVID-19 vaccine in Canada. The process of allocating vaccines across provinces and territories must be clear and transparent. This provides assurances to those engaged in the process and to Canadians at large.
And this will be especially important in the early days of vaccine delivery, when supplies will be limited. Federal, provincial, and territorial governments, along with indigenous leaders, are working together to establish how priority groups will receive vaccines during the initial delivery periods when supplies are limited. These discussions and decisions are being informed by expert advice, including advice from the National Advisory Committee on Immunization. We know that residents and staff of long-term care homes, healthcare workers, seniors, and adults in indigenous communities are top of mind as we consider the allocation of early supply of vaccine. Data and reporting are crucial to a successful pandemic response, enabling us to monitor vaccine safety, effectiveness, and coverage, and to adjust our activities as need be. In Canada and internationally, we have well-established and robust systems for identifying adverse events following all vaccinations and notifying public health and healthcare professionals. We will be leveraging and enhancing these systems and keep Canadians informed. Knowing access to safe and effective vaccines is within sight for all Canadians, provides us with hope. Pourtant, le Canada réalise toujours des taux d'infection élevés, ce qui a mis beaucoup de stress sur les hôpitaux et le système de santé, ainsi que les agents de santé qui réagissent à cette crise depuis de nombreux mois. Now, even as we roll out the COVID-19 vaccine across the country, we must continue to follow local public health advice and maintain individual protective practices that will keep those of us who are not yet immune safe. ओंटारियो ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Well, we've asked we have a table that's made up of public health people and education to look at some concepts around that. We've analyzed the data of what we see in Toronto, Peel, and around the province for that matter. So far, even if you take one of the schools
that means some essential workers may not be able to go to work. And then we have concerns about healthcare workers. And because they say, well, if my children are not in school, then I can't get to the hospital to help out and whatever, or long-term care, et cetera, et cetera. So we have to weigh all those. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਦ ਓਟਾਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। इस दौरान जर्नल रिक हीलियर ने पुष्टि की है कि ओंटारियो में सोमवार को फाइजर वैक्सीन की 6000 डोज पहुंच जाएगी। टोरांटो ते ओटावा के हस्पतालों को प्रति हस्पताल 3000 डोज दे दी जाएगी। फिर यह वैक्सीन पूरे रीजन में वंडी जाएगी। हीलियर ने आख्या कि फाइजर की वैक्सीन को घट तापमान उत्ते जमा के रखना जरूरी है ते एक व्यक्ति को इस दियां 2 डोजा देनिया भी जरूरी ने। इसलिए 3000 ओंटारियो वासियों को पहली डोज मिलन तो बाद 21 दिन लिए अगली डोज वास्ते इंतजार करना होगा। हीलियर ने आस प्रगटाई है कि ओंटारियो को अंदाजन हुण ते जनवरी के अंत तक 90,000 वैक्सीन मिल जाएगी। फिर इसनूं ओंटारियो में 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों में वंड दिता जाएगा। ओंटारियो सूबे में कोरोना का सब तो वध कहर टोरांटो ते पिया। टोरांटो के सब तो वड्डे स्कूल बोर्ड के स्टाफ ने सूबे नूं अपील की है कि स्कूलों को जनवरी के पहले 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ बंद किया जाए। उन्होंने कहा है कि इन परसन लर्निंग भी बंद की जाए ताकि शहर के सारे स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग हो सके। टोरांटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने बुधवार को ओंटारियो के सेहत ते सिक्ख्या मंत्री को खुली चिट्ठी लिख के मांग की है कि पढ़ाई कुछ दिनों लिए बंद की जाए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आस है कि उन्होंने यह बेनतियां मंजूर कर लिया जाएगियां। ओंटारियो सैकेंडरी स्कूल टीचर्स फेडरेशन ने कहा है कि यह बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सानू अपने नाल अपने गुआंढ में रहंदे बच्चों की भी चिंता है और वो चाहते हैं कि सब की सुरक्षा बनी रहे। जिक्र खास है कि पिछले हफ्ते सूबे ने एक पायलट प्रोजेक्ट राही टोरांटो के कुछ स्कूलों में कोरोना टेस्ट किए सन, जिस विच कोरोना के कई मामले भी सामने आ चुके सन ਅਤੇ 2 स्कूलों भी बंद कर दिता गया सी। इस दे लई उन्होंने अपील की है कि इसे प्रोजेक्ट नूं बढ़ा दिता जाए। अध्यापकों ने कहा है कि स्टाफ अध्यापक विद्यार्थियों ते उन्हां दे परिवार वालियां दे भी वड्डे पद्धर ते टेस्ट होने चाहिए ने। कैनेडा के सूबे अल्बर्टा विच कोरोना वायरस कारण नियमां नूं सख्त किया जा रहा है। इत्थे 13 दिसंबर तो अगले 28 दिनों लई कैफे, बार, रेस्टोरेंट, सैलून भी बंद रखे जाएंगे। इस दे लई लोकां ने इस तो पहला खरीदारी भी की है। बाजार भरे हुए सन अते लोकां दा तांता लग्या होया सी। इसके अलावा बड़ी गिनती में लोग वाल कटाउण लई पहुंचे सन। हेयर सैलून वाले ने कहा है कि उन्होंने लोग फोन कर करके समा लै रहे ने। उन्होंने कहा कि सरकार वालों सख्ताई करने के ऐलान मगरों एक दिन में इन्ने ग्राहक आ रहे हैं जिन्ने की आम तौर पर 3 दिनों में आउंदे ने। उन्होंने दस्सिया कि लगभग 200 ग्राहक एक दिन में आउंदे ने। निजी सर्विस बिजनेस जिवें कि हेयर सैलून, स्पा, मसाज, थेरेपिस्ट अते नील सैलून एतवार रात तो बंद रहणगे। बार्स अते रेस्टोरेंट्स नूं भी सख्त हदायतां जारी की गईयां ने अते वो भी बंद रहणगे। बहुत सारे व्यापारियों ने इस गल का विरोध भी किया है अते कहा है कि उन्हां दा व्यापार एक होर महीने लिए बंद होने नाल उन्हां नूं वित्ती घाटा सहन करना पवेगा। सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि अल्बर्टा विच कोरोना कारण हालात बेकाबू हो सकते हैं, इसलिए उन्हां नूं यह कदम चुकना पिया। अमेरिका विच देश के पहले कोरोना टीके नूं मंजूरी दे दी गई है, जो इस महामारी के अंत की शुरुआत बन सकता है, जिसने हुण तक 3 लाख अमेरिका की जान ले ली है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी साझी की थी। खुराक ते दवाई विभाग ने फाइजर अते उस दे जर्मनी साझीदार बायोटेक वालों विकसित टीके की इमरजेंसी स्थिति में वरतों की आग्ञा दी है। अगले दिनों में सेहत कामियां ते नर्सिंग होम के कामियां ते टीकाकरण का राह पद्धरा हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई होर देश सर्दियों तो पहला वध तो वध लोगों का टीकाकरण करना चाहते हैं। अजे विच टीके दीयां पहलियां खुराकां की कमी होगी, इसलिए इन्हां नूं पहल के आधार ते दिता जाएगा। एफडीए का फैसला वड्डे पैमाने ते जारी अध्ययन नूं लैके जनता की समीक्षा के अंकड़ियां के आधार ते किया गया। इत्थों तक कि प्रशासन ने एफडीए मुखी स्टीफन हॉन नूं धमकी दे दी सी कि जेकर टीके बारे शुक्रवार नूं फैसला ना लिया गया तो उन्हां नूं अहुदे तो हटा दिता जाएगा। अमेरिका मॉडरेना वालों विकसित टीके ते भी विचार कर रहा है।
दुनिया भर विच कोरोना वायरस तो बचाव लई टीके दे इंतजार विचकार दक्षिणी अफ्रीका के प्रधान जज मोगो इंग ने टीके नूं लैके एक विवाद भरिया बयान दिता है, जिस विच उन्हां कहा है कि विश्व भर विच जिस टीके नाल उत्साह वध रहा है वो शैतान कोलों आया। इस बयान के बाद मोगो इंग की काफी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया विच एक वीडियो तेजी नाल वायरल हो रही है, जिस विच जज एक गिरजाघर विच प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं ਅਤੇ इस दौरान वो दावा करते हैं कि टीका लोगों के DNA ਨੂੰ खराब कर देगा। उन्होंने अपनी प्रार्थना विच कहा है कि जो परमात्मा वालों नहीं है, अजे किसी भी टीके ਨੂੰ मैं खुद तो दूर करदा हां। महाराज ने कहा है कि वो इस गल तो बहुत परेशान ने कि मोगो इंग लोगों ਨੂੰ गलत सिक्ख्या दे रहे हैं। विट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर ने भी कहा है कि दुख की गल यह है कि एक उच्च अहुदे वाला व्यक्ति लोगों ਨੂੰ वहम विच पा रहा है। फ्रांस विच कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कहर ਨੂੰ घट ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ लॉकडाउन के नाल करफ्यू लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री जिया कोस्टेक्स ने पत्रकारों नाल गलबात विच यह जानकारी साझी की है। उन्होंने कहा कि असं 15 दसंबर तो करफ्यू लगावांगे ਅਤੇ यह सख्त होगा। इस बार यह रात के 9 बजे की बजाय 8 बजे तो लागू होगा। नवे साल से करफ्यू में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में अजे कोरोना महामारी की दूसरी लहर है, इन्फेक्शन का पद्धर तेजी से है, नवे इन्फेक्टेड की गिनती अजे घट नहीं हो रही है। हाल के दिनों में इस वाधा होया वेख्या जा रहा है। उन्होंने कहा कि म्यूजियम, सिनेमाघर और संस्कृत संस्थावां घट्टो घट 3 होर हफ्तियां तक बंद रहणगीਆਂ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन वालों न्यूयॉर्क के नौजवानों के सहयोग नाल भारतीय किसानों के नाल एकजुटता प्रगटाउंदियां होया शांतमई रैली और प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो एतवार 13 दसंबर दोपहर 1:30 बजे लेवी टाउन न्यूयॉर्क तो शुरू होगा। वधेरे जानकारी लिए दिए गए नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।